Okay, beta, in last class we have discussed a few programs. Um, the first one was of number, square and cube, and the second was of table generation, right? So today we will discuss something more. I will write new, first of all, 10, CLS, 20. Actually, today I will write a program of calculating an average of four different number, right? देखिए बेटा average होता क्या है? First of all we will discuss about this. For example, we have two different values, right? The 10 and 20. What is average? Average means the mean of these two values, right? uh, यानी इन दोनों values का जो central point है हम वो लेंगे. So how we can get this? परहेज अच्छे लग रहे हो वैसे. How we can get these this mid value? We will use a formula for this, that the sum of these two values and the divide by the number of values. We have here 2, so we will divide by the 2. It means that, for example, we have first value is 10 and the second value is 20. Then what we will do, we will add the 10 plus 20, then divide by 2. Why 2? Because we have two values. For example, three values hoti like 10, 20 and 30, then its formula will be changed. Now we will do that 10 plus 20 plus 30 and then divide by 3, right? So this is a formula to get our average. So in this program we will take an average of four different number. It means that our formula will be like for example, the four values in a four different variables, so its formula will be n1 plus n2 plus n3 plus n4 divided by 4. So I'm gonna write here a code. Look at here. First of all, we will write some commands by which computer will actually get these four numbers from the user. For this, I will use input command, enter, input, enter, first number, and given it a variable n1. Then on 30, I use again input, enter, second number, given n2 variable. Then on 40 it will be as input, enter, third number, and 350, input, enter, fourth number, and 5. Paris क्यों मुस्कुरा रहे हो? Now we have these four number, right? So when user will give these four number, now what we have to do, we have to calculate its average, and before calculating the average we must have to calculate its sum. uh, Look at here, and not n5 and 4 हम लेते हैं. Okay. Okay. At this place 60, I'm using a new variable with the name of sum that should be equal to the n1 plus n2 plus n3 plus n4. And on 70, what we will do, now we collected the value of sum, then we calculate the value of average. For average, I use a variable avg, which is a short form of average. So average will be equal to the sum divided by the number of values. Here we have four different values, so we will divide by the 4. Now we got our sum and as well as average. We just have to
shown these values on our screens. For this, we will use a print command, and in print we will write the sum is, we will write a variable name sum, and on 90 we write print the average is, and then the variable name avg. Now our code is finished. If I press F2 to run my program, it will ask me the values. uh, I'm gonna give it first value is 2, then it's asked about the second. I'm giving it a 4, then 6, and then 8. Now look at the sum is 20, right? So 2 plus 4 plus 6 plus 8, that is 20, and the average of 20 is 5. ठीक है जी, चूंकि 4 values थी, then it will do that 20 divided by 4, which means the value is 5. Okay, you got my point. Is there any question till here? Anyone have? जल्दी से पूछना बेटा. If you have any question, then you can raise your hand as well. I'm gonna unmute you all. If you have any question, then you can ask me through your mic as well. Hurry up. Paresh, कोई question? Pakar, any No, question? sir. नहीं है क्वेश्चन, मैं फिर पूछूं? नहीं सर. Pakar, कोई क्वेश्चन बेटा? सर ये 70 से दोबारा समझा देंगे? जी. Look at here beta, in the line number 20 I have written input, enter first number. Input command करती क्या है basically, if we want that computer will ask us some value, ठीक है, कोई भी एक value मुझसे पूछे, for this type of thing we use input command, ठीक है. So input enter first number, between the inverted commas I have written enter first number. जो चीज बेटा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी हुई होती है, इट विल शोज एज इट इज ऑन आवर स्क्रीन. यही देखो टॉप पे बिल्कुल स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, एंटर फर्स्ट नंबर. एंड देन व्हाट हैपन, ये मुझसे एक नंबर मांग रहा है. इफ आई गिव इट अ नंबर 2, व्हाट हैपन, दैट 2 विल एक्चुअली सेव इनटू द दिस वेरिएबल n1. ठीक है, ये एंटर फर्स्ट नंबर के आगे जो मैंने n1 लिखा है, दैट इज द नेम ऑफ अ वेरिएबल. So when I place any number, then this number will actually store temporarily into this variable, which is n1. And on line number 30, the same situation is here for the second number, and its variable name is n2. तो जो भी हम second number देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ 4 दिया, it will stored into the n2 variable. As it is for the third number, that its variable name is n3, then n4. एंड आफ्टर दिस करेंगे क्या, हम इन सबको ऐड कर देंगे, लाइक n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4, and the sum of these value will be stored into the new variable which is here, sum, sum is equal to n1 plus n2 plus n3 plus n4. ये करेगा क्या, इन चारों को ऐड करके और इनकी जो वैल्यू होगी उसको sum नाम का एक वेरिएबल मैंने लिया है, ठीक है, उसके अंदर ही स्टोर कर देगा. And after that we have to calculate its average, and average formula is sum divided by the number of values. So the value of sum is in a variable name which is also a sum, so divide by 4. Why 4? Because we have 4 different values, right? So that's why I use here a 4. So it will calculate it and store the value into the avg variable, ठीक है. Again it's avg is the name of a variable. तो ये जो सम डिवाइड बाय 4 के बाद जो भी इसका आंसर होगा, इट विल स्टोर इनटू द avg variable. And after that I have written print sum, the sum is, and then without inverted commas sum, which means it's a variable, so it will place the value of this sum variable. यही वजह के ऊपर देखें, अगर आप 5th लाइन में जो आंसर आया था हमारा, उसमें क्या लिखा हुआ है, the sum is 20. Then line number 90, which is
print the averages and then without inverted commas avg, which means it will shows the value of avg variable. ठीक है, तो यही वजह वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है the average is 5. Clear? Is there any another question? No, sir, it's clear. Good. Nimra, any question from your side, beta? नो सर, समझ आ गया सर. Good. फरेज, आपका कोई क्वेश्चन? बाकी तो सब असल में गूंगे होते हैं इस क्लास में, सिर्फ ये आप लोग 3-4 हैं जो कि क्वेश्चन भी पूछते हैं. अब्दुल रहमान साहब तो माशाल्लाह सिर्फ मौजूद है, वॉइस के साथ ही नहीं है. सर वो सो जाएंगे, जी वो सो जाएंगे. सो रहे हैं? सर आपने अभी उनसे क्वेश्चन किया ना, तो वो अब सो जाएंगे. दोबारा बोलो, समझ में नहीं आई बेटा आपकी आवाज. फरेज, आस्क योर क्वेश्चन अगेन. हेलो फरेज. यस सर. बेटा आपका क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा मुझे, दोबारा पूछो. सर मैंने तो कोई क्वेश्चन नहीं किया. अभी अच्छा, अभी आवाज आई थी आपकी तरफ से. अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन बेटा? सर, मुझे एक चीज पूछनी थी. जी जी. सर, ये जो आपने बैकग्राउंड लगाया हुआ है, ये मैं लगा सकता हूँ मतलब किसी तरह मोबाइल में? अच्छा, वो मोबाइल में तो मुझे नहीं पता कि पॉसिबल है या नहीं. ये आपकी वीडियो की जो सेटिंग होती है ना, उसमें आप जाएंगे तो वर्चुअल बैकग्राउंड आप सेलेक्ट कर सकते हैं. उसमें आप कोई इमेज भी खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं. जैसे फ्रेज ने खुद से एक बैकग्राउंड सेलेक्ट किया हुआ था, ये बाय डिफ़ॉल्ट वाले हैं. ग्रीन स्क्रीन ज़रूरी नहीं, हुज़ैफ़ा का आया है ग्रीन स्क्रीन ज़रूरी नहीं है उसके लिए ग्रीन स्क्रीन हो. यही वजह है कि मेरे अगर बैक पे देखो तो काफ़ी कट पिट हो रही, क्योंकि मैंने पीछे ग्रीन स्क्रीन नहीं यूज़ की हुई. ठीक है, तो मेरे तो सोफ़ा है जो उसका कलर आ रहा है. बाकी जैसे यूँ मैं मूव करता हूँ तो ये डिपेंड करता है आपके लाइट्स कैसी हैं ना, सिचुएशन में. सो इट डिपेंड्स अपॉन दैट. ओके. Okay, beta, now we discuss another program. First of all, I'm gonna save this one, and for this I press F4, then giving it a name like PR4. Okay. Now I'm gonna use new keyword and then CLS. निम्रा शहजाद. ओके, अनम्यूट कर रहा हूँ. निम्रा, कोई क्वेश्चन है बेटा आपका? सर मैं पूछ रही थी कि जो आपने लास्ट टाइम हमसे प्रोग्राम बनवाया था सर, वो मैंने खुद भी बनाया था तो उसे सेव किया था. तो सर जो आपने एक आप वो सेव प्रोग्राम्स की लिस्ट खोलते हैं जो आपने सेव किए हुए, सर वो कैसे खुलेगी? FILES फाइल्स देखेंगे. FILES एंटर करेंगे तो आपके पास ये लिस्ट आ जाएगी. जी सर, थैंक यू सर. Okay. Now I'm gonna write another program in which इसका टास्क बहुत गौर से सुन लीजिए. In which I just wanted that I give a sequence of number. ठीक है, और वो sequence of number कुछ इस तरह से. For example, I'm giving it a number from 3 to 28. गौर से सुनिएगा. I'm giving my computer a number from sequence from 3 to 28, and I just wanted to make its a series values of a 5 difference. यानी कि पहला नंबर हो that is 3, and after that the second number will be 3 plus 5, that is 8. So next number will be 8, and after 8 the next number will be 8 plus 5, that is 13, right? So as it is after 13, it should be 18, and then 23, and then 28.
मैं कंप्यूटर को जो नंबर दूंगा that will be from 3 to 28 only. ठीक है, कंप्यूटर will generate all the rest of the values by itself, right? And then उसको जो मुझे प्रिंट आउट देगा वो उसके असेंडिंग ऑर्डर में पहले दे. ठीक है, वो किस तरह करेंगे? Look at here. I'm gonna write here 10 CLS 20. At the line number 20, I'm gonna start the loop for giving it's a variable name a, और यहाँ पर मैं इसको बाउंड्री दूंगा and the boundary is 3 to 28. मुझे ये वैल्यूज देनी है. ठीक है, if I give this number, then what happen? It means that a is a variable, and when first time this program will run, a will having a value 3, and the next time having a one more add into this 3, that will be 4. The next time it will be 5, and so on till 28. But we don't want this. We want कि फर्स्ट टाइम उसमें 3 हो एंड आफ्टर दैट 3 के बजाय जो है वो वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास 3 plus 5, that will be 8. So what we will do for this, I will write here one more thing, that is step and then 5. ये बेटा step 5 क्या करेगा? It will add the 5 into the boundary values, right? So first time that will be 3, and after that जब वो next time चलेगा then it will be make it's a increment of 5. So 3 plus 5, that will be 8. Now I'm writing at 30 print the value of the variable, that is a, and at 40 I'm gonna write next and the variable name, which is again a. ये सिंपल बेटा 4 लाइन का प्रोग्राम है, but it's very powerful. Now I'm gonna run this program, run enter. Look at here, what happened? वो पूरी सीक्वेंस जनरेट हो गई. 3, then 8, then 13, 18, 23 and 28 in ascending order. ठीक है, so this is how you can use these number in ascending order. Now I'm making something more modification here. I just wanted that to put some headings on the same program. For example, when it's writing 3, 8, 13, 14, 18 and so on, before this I just want to make a heading. It means कि ये जो मेरे पास 3, 8, 13 आ रहा है, ये बेटा कब आ रहा है? ये line number 30 की वजह से आ रहा है. When I just write here a print a, the value of a will be printed on your screen. So before this, I just wanted to place a heading. It means 30 से पहले और 20 के बाद रख देते हैं. So I'm using here 21 print inverted commas, और मैं यहाँ पर एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ. And at 22 I'm gonna write print, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ output. और यहाँ और 23 पे I'm gonna write here print and again line. Now if I press F1 and enter, then these line 21, 22 and 23 will automatically goes to its correct position after 20. ठीक है, आप देख सकते. Now if I press F2, look at what happened. लिखा क्या आ रहा है? 3, then output, then 8, then output, then 13 and output and so on. Look at its code again.
Anyone else who can tell me that why this thing is happen? ये बार बार repeat क्यों हुआ? I'm gonna open your mic. जी, क्या वजह है बेटा? ये मेरे पास बार बार क्यों लिखा आ गया? ये तो मुझे एक मरतबा लिखना था। जल्दी से बताएं, माइक मैंने खोले हैं। वकार, आपके ख्याल में क्या है? कुछ भी बता दो। जस्ट अ मिनट निम्रा, मैं आपसे लेता हूँ आंसर। जी वकार, क्या वजह हो सकती है बेटा? नो आइडिया? नो सर। ओके, नो प्रॉब्लम। निम्रा? सर क्योंकि आपने इसे लूप के बाद लिखा है, इस वजह से। गुड। क्योंकि बेटा मैंने लूप की बाउंड्री के अंदर लिख दिया है, ठीक है? ये मैंने गड़बड़ कर दी है। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था, जो भी चीज़ हम लूप के अंदर लिखते हैं दैट विल बी रिपीटेड इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, but we don't want to be repeat this heading again and again, so we should to include this before the starting of loop, ठीक है? ये मैंने यहाँ पर जानबूझ के लिखा क्योंकि मैंने आपको सिनेरियो ये कहा कि मुझे तो जो a की वैल्यू प्रिंट हो रही थी उसके फौरन बाद जो है, ओ सॉरी, उससे पहले मुझे चाहिए, और उससे पहले तो 20 भी बन रहा था, 30 से पहले 20 भी बन रहा था। So I include these 3 lines at the position number 20। अच्छा, अब हम इस पे ज़रा कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई go here and change into 11, 12 and 13। देखते हैं क्या ये पोजीशन चेंज करता है। अब देखें, पोजीशन तो इसने चेंज की, बट इट एक्चुअली मेक इट्स कॉपी, क्योंकि ये 21, 22, 23 पे भी मौजूद है, ठीक है? तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको, यही प्रॉब्लम है GW बेसिक की, कि जब आप एक लाइन इंक्लूड कर देते हैं ना बेटा, तो उसको इरेज नहीं कर पा रहे होते। तो इसके लिए अब देखें हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक ऐसी कमांड लिखेंगे कि जो कोई इफेक्ट नहीं डालती इसमें, ठीक है? इसके लिए हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इंक्लूड कर देता हूँ चलें, अभी इसको यूँ करते हैं, हम गैप दे देते हैं, यानी प्रिंट 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 यूज़ करता हूँ, दैट विल एक्चुअली मेक अ 3 लाइन्स ऑफ गैप, ठीक है? बाद में हम इसकी डीप में जाएंगे, यहाँ हम कुछ और भी कर सकते थे या नहीं। ठीक है, दिस इज अवर कोड। नाउ इफ आई प्रेस F2, हुआ क्या, मेरा प्रोग्राम तो रन हुआ, लेकिन चूंकि 3 लाइन का गैप है तो हेडिंग जो है वो ऊपर गुजर गई, ठीक है? फिर हम ये करते हैं कि गैप नहीं देते हैं, वी यूज हियर वन मोर कमांड, दैट इज REM एंड REM। ये रिमार्क्स के लिए एक्चुअली होती है, ये कमांड ऐसी होती है जो कि आपके आउटपुट पे इसका कोई असर नहीं होता। नाउ इफ आई प्रेस F2, नाउ लुक एट, ठीक है? वो जो गैप था वो खत्म हो गया, एंड आवर हेडिंग इज अपीयर ऑन आवर स्क्रीन, दैट इज आउटपुट, राइट? Then it's heading, and after that we have a number, or we can use one print here only, ताकि उससे होगा क्या, थोड़ा गैप आ जाएगा नंबर्स में, ठीक है? So this is how you can place your values, okay? Areeb Ali का hand raised है, okay Areeb? Yes Areeb, ask your question. No question, okay? आप लोग हैंड रेज करते हैं, जैसे ही मैं माइक अनम्यूट करता हूँ अक्सर ऐसा होता है, क्वेश्चन नहीं पूछते आप लोग। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा?
Any question, any problem? Okay, one question from, no sir. Okay. I'm gonna save this program again. PR 4A कर देते हैं इसको, ठीक है? Why? Because it's our practical 4A. Okay. Now I use a new keyword. New. Again writing another program जो कि सेम ही होगा इसका, ठीक है? प्रैक्टिकल 4 जो है ना बेटा, उसके ए और बी दो पार्ट हैं. ए ये था जिसमें आपने 3 से लेकर 20 तक की जो नंबर्स हैं उनकी असेंडिंग ऑर्डर जो है वो जनरेट करने होते हैं. एंड आफ्टर दैट वी हैव अनदर इट्स पार्ट दैट इज 4B. और इसमें क्या करना होता है, सीक्वेंस सेम रहेगी यानी 3 से 28 तक, बट द डिफरेंस इज कि अब उसमें आप डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वो प्लेस करना चाह रहे हैं. सो फॉर दैट वी यूज लाइक 10 CLS. अब हम हेडिंग जो है वो डायरेक्टली यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? सो प्रिंट में दे देता हूँ हेडिंग and at 30 I use print. थोड़ा आगे करके मैं लिख दूंगा आउटपुट inverted commas. Then at 40 I'm gonna write ठीक है, आप प्लस के जरिए भी लाइन दे सकते हैं. It depends on you that which character you're using to make your line. At 50 now I'm gonna start our loop again, that is 4A is equal to. Now remember, I just wanted to place the values in the descending order. So in our descending order, the values will be like first of all 28, then 23, then 18 and so on. तो सबसे पहले मुझे 28 चाहिए ना, तो मैं जो यहाँ पे बाउंड्री दूंगा वो इसी तरह से दूंगा. नाउ इट्स बाउंड्री विल बी 28 to 3. और स्टेप में पहले क्या था 5, नाउ इट विल बी -5. ठीक है, तो फर्स्ट नंबर होगा 28, then second number will be 28 minus 5, so it will be 23. Then next will be 23 minus 5, that will be 18 and so on. तो इस तरह से ये नंबर हम जनरेट करेंगे. So at 60 it will be print A. 70 मैं एक लाइन का गैप दे देता हूँ, तो सिर्फ डायरेक्ट अगर मैं प्रिंट की कमांड दे दूंगा तो वो एक गैप आ जाएगा. So at j 80, not only 80, next A. So now if I run this program, so look at here. अब जो मेरे पास वैल्यूज आई हैं वो क्या है, वो मेरे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रही है, ठीक है? 28, 23, then 18, then 13, then 8 and then. Okay beta, is there any question?